किसी की फेयर जीत को आपने हार बताई कि आज उस चीज का कर्मा उनके पास है। हीरो की तरह मैंने एक ब्रेसलेट बनवाया था जिसमें यहाँ पे क्राउन था और मैं क्या था, मैं किंग बनने आया हूँ, क्योंकि वो किंग और कोई। Does Nikki come in that category? Yeah. Especially people who come from the reality background, they tend to be around these controversies ताकि वो relevant। प्रभजोत, she was like, बस ये बताना कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है, तो मैंने तभी ये बोला। वहाँ पे कंटेस्टेंट्स जो खड़े हैं जिनके साथ मैं ऑडिशन देने आया हूँ, वो कह रहे हैं देख देख कोई स्टार है शायद, कोई सेलिब्रिटी। मुझे एक स्केयर मिला था रन सर से अपने पहले ऑडिशन में। सिद्धार्थ शुक्ला एक्चुअली में ऐसा है, ये टीवी पे आके हीरो नहीं बन रहा। तुम कैमरे के बाहर उसको घर पे मिलो तो ऐसे एटीट्यूड में मिलेगा। तेरा बाप बोल। 7 साल की पॉपुलैरिटी, बसीर अली, ये वो रियलिटी टीवी में मैंने जो भी इज्जत कमाई, इट हर्ट्स मी इवन टुडे अ लॉट ऑफ इट। ऐसे तोड़ता हूँ रिश्ते। I don't if I feel once also that कुछ ऐसे relationships, कुछ ऐसे लोगों के साथ मैं अटका था जहाँ पे मैं सोचा इसके अंदर तो दिल भी नहीं है और मैं इसको कहाँ से इतना इमोशन दे रहा हूँ। Carries a lot of attitude with him. सब के सब फाड़ में जाओ, तुम लोग से दोस्ती बनाने नहीं आया। There's a gossip on the set कि अरे शौर्या ने ऐसे बोल के चला गया है। मेरा रेसिग्नेशन दिया हुआ था that I am leaving। उसी आर्टिकल में अगर आप नीचे जाके देखो, I have noticed a few things that he did on the show which I still feel like उनको नहीं करना चाहिए था। कुछ गेम्स खेली गई, कुछ पॉलिटिकल। मोहित ईरानी, श्रुति, कैसी दोस्ती थी उनकी। I fell in love with someone and it was so serious that मैंने अपनी मॉम को भी बोल दिया था कि मैं आप लोगों को भी छोड़ दूंगा इसके लिए। One reality show fixed all my problems with my mother. Which one? Shiv Thakre, Priyank, Divya, Samyukta, me, Varun. There's this rumor that you were approached as a gang leader. He was cornered and bullied. Thank you. Everybody was laughing at him. पता भी किया है कुछ कुछ चीजें। This guy when they were taking the flights, if I start showing that, it's going to be so Many people will be expert. यहाँ पे लोग एक ही शो में एक ही सीजन में 25 पर्सनालिटी दिखा रहे हैं। ऐसे टॉक्सिक लोग भी मेरे को आके यूज करके चले गए और आपकी माँ ला रही है तो कुछ सोच के ला रही है। अब मेरे को लगा व्हाट इफ आई हैव टू स्टैंड इन दिस लाइन, आई वन द पास एंड आई केम, बट व्हाट इफ आई हैव टू स्टैंड इन द लाइन। आकृति नेगी एक्चुअली मेड द शो वेरी इंटरेस्टिंग। वो एटीट्यूड, एरोगेंट है, गुस्से वाला है, ये वो जो बातें होती हैं। Your exes will be called one by one. 100%। क्या पता एक दो क्रिएटिव में भी बैठी हो पीछे। भव्या literally walked into my life like a guardian angel and oh my god, are you gonna say this? Hi guys, what is up? This is your girl Bhav and welcome back to my YouTube channel. Today we have my favorite, everybody's favorite, Basir in the house, baby. Let's go. Finally I'm glad कि मैं physically आपके साथ आपके podcast में second podcast. Yeah, this is the second time I'm doing it with Bhavya, but first time it was just a telephonic. Yeah. And this time we're doing it right here with. Yeah. So I'm guessing this one's going to be a much bigger banger than the first time. Yeah. So I have a lot of personal questions. We've already spoken about your journey while you were in Splitsvilla. Right. And whatever Ace also is, like whatever the shows you've done. I want to know the inside now because I have that comfort level with you. Okay. Yeah. So my first question, So my first question to you is that there was this buzz round the corner that you were kicked out of the show. Which show? The show you are doing currently, Kundli Bhagi. Kundli? No. So basically there was what a TOI happened? article. Yeah, there was. I do know about it, and some people from my team also sent to me saying we will do a counter to this, which I thought was not important. What happened was I took a break and went to Bali. That chutti wasn't sanctioned. The day I was leaving from the show, I had a little bit of a tiff with my production and I said, I am going. आप देख लो आपको क्या करना है, छुट्टी आप नहीं दे रहे, मैं 1 महीने पहले से बोल के हूँ। That was a gossip on the set कि अरे शौर्या ने ऐसे बोल के चला गया and all that. तो when I came back, मेरा रेसिग्नेशन दिया हुआ था that I am leaving. So I think उसमें ये उसी आर्टिकल में अगर आप नीचे जाके देखो तो sources from the set have said this करके आया है। Sources from the set. तो प्रोडक्शन का ही नाम यूज किया गया कि बालाजी ने ही ऐसा बोला है। When I spoke to Balaji was like, you are the one giving out articles that you're quitting. You're not even quitting. You're not allowed to quit. That's when the whole stupid conversation came through कि यार ये किसी ने ऐसे gossip बना दिया कि I'm being kicked out. Probably that could have been a strategy also. Like किसी ने तो किया है genuinely, जिसने किया है, हाँ exactly, I'm like किसी ने तो किया है, फायदा तो end of the day show का ही है, that we are being discussed. Show का ही है. So I think that works out. But then people also say that you're a little snooty and like you have that nature of being the actual Shaurya in real life. Absolutely. मैंने यार इतना open out लोगों को दुनिया में बोला भी है कि I'm getting paid to be Shaurya, जैसे मैं बसीर हूँ real life में, वो same character. And you cannot take away something जो मैंने 7 साल में बनाया है.
अब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ जो मुझे 1.5 year समथिंग हुआ है, बट आई हैव बीन पॉपुलर एंड रेलिवेंट टू द टीवी स्टफ फॉर द पास्ट 7 years सिंस 2017. एक पर्सनैलिटी बन गई है, आदत हो गई है एक सर्टेन ट्रीटमेंट की, एक लाइफ जीने का एक तरीका होता है, एंड यू मेक योर सेल्फ लाइक दैट. आप अगर अपने आप को आगे नहीं रखोगे तो दुनिया आपको वो पोजिशन पे नहीं देखेगी. तो इफ इमेजिन एज एन एक्टर 7 साल की पॉपुलैरिटी, बसीर अली, ये वो रियलिटी टीवी में मैंने जो भी इज्जत कमाई वो सबको पीछे रख के, आउट ऑफ द डोर रख के मैं एक एंटर हुआ हूँ एक्टिंग की दुनिया में जहाँ पे मुझे जीरो से स्टार्ट करना है फिर से. दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज आई फेस्ड आफ्टर मूविंग टू बॉम्बे एंड यू नो स्टार्टिंग अ लाइफ हियर अगेन. तो कहीं ना कहीं वो एटीट्यूड मेरा क्लैश हो जाता है. लोगों को मेरी जर्नी के बारे में नहीं पता. जैसे अब मैं बालाजी में काम कर रहा हूँ, वहाँ के प्रोडक्शन हेड्स, वहाँ के क्रिएटिव हेड्स जो मेरे को मेरी जर्नी नहीं देखे हुए हैं, जिनको पता नहीं रोडीज स्प्लिट्स चला, उन्होंने ज़्यादा देखा नहीं उस जमाने में 2017 में. अब जाके उनको होता है कि ये क्या है, हमको एटीट्यूड दिखा रहा है. आफ्टर स्पेंडिंग अ ईयर एंड अ हाफ दे नो वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम. आई ऑल्सो टोन डाउन कि नहीं भाई ये भी अपनी फील्ड में किल कर रहे हैं, तो ये क्लैश की जरूरत नहीं है. बोथ ऑफ अस हैव, इट्स लाइक इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली और फ्रेंडशिप का इक्वेशन जो बिल्ड होता है कि आप एक डिफिकल्ट स्पॉट पे आ भी जाते हो, इवेंचुअली यू वांट टू क्लियर दैट एज वेल. सो ये साथ रहते रहते जिनके साथ आप एवरी डे काम कर रहे हो वो तो होना ही है, क्लैशेस तो होने ही है. So this lifestyle of yours, you had it before you entered the TV industry? Like let's talk about entering Splitsvilla. Yeah. You were a privileged child? I wouldn't say privileged, but I was always a guy with a personality. I was always someone different. If you go back to articles, जो आपने अभी जैसे देखा कि I was apparently being kicked out. My first ever article, उसका first headline was, if you put me in a list of 100 people, 99 will be on one side and I will be on the other. तो ये मैं स्टार बनने से पहले ही मैंने ये आर्टिकल दिया था, जब मैं रोडीज सिर्फ करके आया था, अभी टीवी पे एपिसोड्स भी नहीं आए थे. तो what do you understand from that interview and that headline? Because you wanted to be that person, so you were already living that life. I always told myself that I was special. Even when I was not a TV person, when I was not a star, not popular, whatever people like to call it, I treated myself as someone who was a star. So basically, I read this quote on Instagram which said that, you know, if you want to live that life, you have to start pretending that you are in that life. You believe, क्योंकि देखो, for example, I'll ask you a question. How old are you now? 27. 20. I'll cut that. Yeah, maybe you can cut this. But in all your life, who has been the hero of your story? Me. Right? I'm the main character. भव्या is the main character. Yeah. तो अगर भव्या अपने आप को उतना आगे नहीं रखेगी तो भव्या के लिए कौन रखेगा? भव्या के पेट की भूख बसीर को पता है, भव्या के मॉम डैड को भी नहीं पता है, भव्या को पता है. So if you don't place yourself ahead in life, nobody else will. So if I wanted to be seen as the Basir I am seen today, I have started working on it before I was famous. That helped me ease my journey. Who is Basir, by the way? Like, how do you, if people call you, like yesterday I was doing this podcast with Naina where she defined you in 3 words, where I think both of us agreed on was, you're mentally very there, like you're solid with your mental strength and you know what you want and you go for it, and you know, like you're somebody who doesn't listen no for an answer. Like, if you have a dream, like, oh God, I want. To be honest, you know, Bhavya, I'll be very honest. I think I have seen myself, I've seen so many Basirs. 2017 में जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी तब एक बहुत ही अलग बसीर था मैं, because I was hungry for it, I wanted to prove myself, all of that. Cut to the Basir I am today. I have no reason to prove my point to somebody, get into a debate, argument, show them that I am right or wrong. वो urge चला गया मुझ में से, because I am happy with my work. मैं उठता हूँ, काम पे जाता हूँ, पैसा कमाता हूँ, I come back, I live a normal life. And this is my focus right now. I want to build a future. आज मेरे goals अलग हैं. जब बसीर एंटर हुआ था मेरे goals बिल्कुल अलग थे. मुझे यहाँ तक पहुँचना था जहाँ मैं आज बैठा हूँ. इससे भी शायद ऊपर था, but ठीक है, you aim for the stars, you'll at least land up in the sky. So you don't have the hunger anymore, you're saying? No, I'm not saying I don't have the urge to prove my point and get into situations and push. जैसे I know so many people from the reality background. I think I also consider myself in one of that who wants to prove a point. थोड़ा सा laid back हूँ मैं अभी मुझे घुस के हाँ मैं बताता हूँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं वो मुझे नहीं चाहिए. Especially people who come from the reality background, they tend to be around these controversies ताकि वो relevance बनी रहे. भाई अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा चल रहा है, relevance के लिए controversy नहीं करनी हमें. But have you done something like to be relevant? Like, have you ever thought of कि पहले, like, were you? मैंने किया ना, जब मुझे नहीं करना था मैंने टिकटॉक किया. Relevant. So yeah, I mean I was hanging around with Bombay people around that time. It was the early days and 2019 के आसपास आ चुके थे, 18 and 19. And the
the scene was growing like crazy. All the people we see from TikTok जिनके अभी 20, 30, 40 मिलियन है, उन्होंने बहुत काम भी कर लिया है. All are prominent people. Oh, you were with all those people? I wasn't, but देख तो रहे थे ना, क्योंकि हम भी वही टाइम पे रियलिटी से ग्रो हो रहे थे, ये टिकटॉक से ग्रो हो रहे थे, तो प्लेग्राउंड तो सेम ही था. तो जो हमारे सीनियर्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल एट दैट टाइम विकास गुप्ता वाज अ वेरी प्रोमिनेंट फिगर इन द गेम, एंड ही वाज लाइक, यू नो, व्हाई आर यू नॉट डूइंग टिकटॉक, यू हैव टू डू इट, ऑल ऑफ अस एज अ ग्रुप वी शुड डू इट एंड ऑल दैट. तो वहीं पे वो जेडब्ल्यू में एक दिन बैठ के रेस्टोरेंट में मैंने भी 1-2 टिकटॉक्स बनाए. आई थिंक आई मेड 2 ओनली. आई हैव दोज ऑन माय फोन आज भी, मुझे बहुत क्यूट लगते थे. मैंने 2 टिकटॉक्स बनाए थे, बट या टू बी रेलेवेंट मैंने एक ऐसा ट्राई किया था, बट आई न्यू इट वाज नॉट माय गेम. कंटेंट वाज नेवर माय गेम. Yeah, for sure. I think your thing is very TV stuff. Like, You put me in a show. I just love the fact that now you're pretty mysterious. Like, nobody knows like what you're doing in your life, and like all we see is like your acting Shaurya thingy going on right now, and like all of that. Leaving the girls' point. That's exactly what's happening. If I start showing that, it's going to be so So many people will be exposed. But we'll get to there, since you mentioned Vikas Gupta. Yeah. And you have done this Ace of Space. I never thought I'll ask this question, but you know, a lot of people who've come on my podcast have said that you know, Vikas really ruined a lot of people's career. Do you believe in that? Or you are neutral? I have, about this particular thing that you just discussed, कि ऐसा लोग बोलते हैं कि विकास ने बहुत लोग के करियर्स के साथ जो भी किया है. I have been around the same conversation. So many artists from my age group and that time पे जो relevant थे, especially to Lost Boy and around them, I've heard this a lot. Personally, I had this experience with Vikas on a very different tangent because of the show. I have noticed a few things that he did on the show, which I still feel like उनको नहीं करना चाहिए था. कुछ गेम्स खेली गई, कुछ पॉलिटिकल चीजें जो शो के हित में थी. लेट्स से इट कि हर चीज एंड ऑफ द डे व्हेन यू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, आप ये गिवन दे देते हो कि हम हर वो चीज करेंगे तो जिसमें शो का फायदा होगा. वी आर पार्टिसिपेटिंग, तो हम उसको आज क्वेश्चन नहीं कर सकते. दैट्स देयर लीगल बेनिफिट. तो लेट्स से कि उन्होंने शो के हित में की, लेकिन किसी की जर्नी के साथ खिलवाड़ किया, किसी की फेयर जीत को आपने हार बताई या जो भी किया. आई बिलीव कि आज उस चीज का कर्मा उनके पास है, जिनके भी साथ उन्होंने किया. कितने सारे लोग हैं जो आज कर रहे हैं, जो उनके साथ थे, जो नहीं कर पा रहे थे, आज वो कर रहे हैं, काम बढ़ गए आगे जाके. हम कितने लोगों को नहीं जानते, बट वो कहाँ है, वो शायद आज वैसा नहीं करे जैसा पहले कर सकते थे. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि karma has its way to take and give. What goes around comes around. Yeah, so I hope that it's a bad phase and he also comes out of it. I still don't know personally कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, but he's not as relevant as he was before. Yeah. So now when we come to your earlier stage, while you were doing Ace of Space and you were doing Splitsvilla, the reality Roadies, and you have done it 2 times, like what according to you like was there back then that people these days, you know, like your season of Splitsvilla is some season which it's still on air. Yeah. And you know, like it's always running. So what do you think people now lack and they had it Originality. then? Okay. Originality का चक्कर है अभी. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सीजन्स के टाइम पे, अब मेरा वो सीजन था सीजन 10 जहाँ पे Oracle इंट्रोड्यूस हुई थी. हमको पता ही नहीं था कि कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है. मैं हीरो की तरह मैंने एक ब्रेसलेट बनवाया था जिसमें यहाँ पे क्राउन था और मैं गया था, मैं किंग बनने आया हूँ, क्योंकि वो किंग और क्वीन का कॉन्सेप्ट होता था. और ब्रेसलेट वेस्ट हो गया, क्योंकि वहाँ पे तो ऑरेकल था, वहाँ पे किंग क्वीन का एंगल ही नहीं था. तो इवन इफ आई हैड कि मुझे ये सब करना है, वो आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन वैसा आ ही नहीं रहा, तो क्या आंसर दोगे आप जो आप याद करके आए हो. आजकल लोगों को पता है ऑरेकल है, शो का कॉन्सेप्ट है कि एक लड़की रहना जरूरी है, अगर आप नहीं भी इंटरेस्टेड हो आप चला लोगे. पहले वाले you go back to season 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bro, people were like, I will not stay only if this person is not there. They either felt for this person or they were open like I'm only here for the game. यहाँ पे लोग एक ही शो में एक ही सीजन में 25 पर्सनालिटी दिखा रहे हैं. As audience, I feel like करना भी चाहूँ तो I'm questioning that person. Because there is no personality. पर्सनालिटी स्टैंड नहीं कर रही. आज ऐसा है तो कल वैसा है, परसों वैसा है. मैं कह रहा हूँ ये आजकल मेरे को डगमगाते हुए पर्सनालिटीज बहुत ज्यादा दिख रही. Like I would like to say this, you are very same. Like on camera and off camera, you have the same personality. Exactly. You have strong opinions. But Busy, you remember I met you the last time. You know, we were sitting in somebody's house, which I don't want to discuss about. But you said one thing to me which really stayed with me. Was like you said that you know, Bhavya, you are playing very safe. Right? And that was it is. And you know, like you won't believe, like after that so my life was like, I'm not gonna play safe, blah blah blah. Do you think like you are playing safe somehow by not saying things out loud? Because you just said that, you know, I'm just laid back. So is it because that you don't want to be in controversies? I question myself कि मुझे जरूरत है क्या? Honestly, सच बता रहा हूँ. Like अगर
मैं जो भी आज कर रहा हूँ वैसे नहीं चल रहा होता, अगर मैं थोड़ा बेकार बैठा होता अपनी लाइफ में, थोड़ा टाइम होता मेरे पास, मैं सच में ये सब बुलशिट में इन्वॉल्व भी हो जाता. बिकॉज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, इट्स कीपिंग मी सो बिजी भव्या. आई barely find time for the social life that I used to have. मेरा फ्लैटमेट यार, he keeps telling me कि तुम हर दिन घर में बैठो, आज भी छुट्टी, आज भी घर में बैठो. He तानाफाइज मी कि तुम क्यों इतना, क्योंकि मेरी बॉडी अलाउ नहीं करती कि भाई मैं छुट्टी मिलती बाहर निकल जाऊँ, फिर पार्टी करके सो के उठो, सुबह 9 बजे का कॉल टाइम. तो what I'm trying to say is I do not have, honestly, जो हमने बीच में कट किया द गर्ल्स पार्ट, अब जो भी शो से बीच में जिम विम, मेरा फ्रेंड, मेरी गेमिंग, वीडियो गेमिंग बहुत करता हूँ मैं, वो सब, फिर जो भी मेरी लाइफ में इन्वॉल्व है, फैमिली, गर्ल्स वर्ल्स जो भी है, वो सब करने के बाद मेरा टाइम कहाँ है कंट्रोवर्सी का भाई. बिफोर दिस आई एम लाइक आई वांट टू स्लीप. मेरा दिन खत्म हो जाता है. आई होप मेरे 24 से नहीं 25-26 घंटे होते मेरे दिन में, फिर शायद 1-2 घंटे कंट्रोवर्सीज ही कर लेता. But you were very like how you just said it also in a very humorous way. You've been always like very open about your girls thing. You know, like, you know, what is your thing, bro? Some people are just used to having a companion. Yeah. Like, Yeah. लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लव टू टेक द नेम्स, मोहित हीरानंदानी, श्रुति, कैसी दोस्ती थी उनकी, आज भी है. दे हैव फाउंड दैट पार्टनर, फ्रेंड, कंपेनियन, व्हाटएवर इन ईच अदर. तो वो दोस्तियां स्ट्रॉन्ग चलती है. मैंने फर्स्ट हैंड देखा, आई अप्रिशिएट इट, आई रिस्पेक्ट दैट. Some people find it in friends, some people find it in family, some people find it in whatever. I think for me it's always been a partner. I've always looked for the right companion with the right mindset. Or trust me, every time I had a decent companion, I grew in life. Lot of women have said that I have been with Basir. I have Basir. Huh? All the reality stars on though, I think you have a kink about it. No. You're really their favorite or something. I just want to say that I'm a giver. Really? For real? I'm not going to lie, I am a giver. They want love, I'm kidding. And I have abundance of emotion in me. I've realized that. मैं शायद ये same question इस तरीके से 2 साल पहले आंसर नहीं कर पाता, but because of the life that I've lived कुछ सालों में, और कुछ ऐसे phases, कुछ ऐसे relationships, कुछ ऐसे लोगों के साथ मैं अटका था जहाँ पे मैं सोचा इसके अंदर तो दिल भी नहीं है और मैं इसको कहाँ से इतना emotion दे रहा हूँ. तो तब मुझे realize हुआ it's not them, it's you. तो कहीं ना कहीं yes, I've had a very Long public list. and a very open like history of dating, and it's okay. I am honest and open about it, and if someone wants to come and connect with me and you know whatever, see if we can build, they come with that information. I can't keep things hidden. मेरी लाइफ में मुझे ये इसके प्रोज और कॉन्स दोनों झेलने पड़े हैं, सच्चाई और ऑनेस्टी का रास्ता, क्योंकि वो बेस्ट है. आप मेरे को ना, I can never allow anyone to point a finger at me. Like, how did you say this back then and now you're contradicting this? तुमने झूठ बोला या तुम ऐसे. They understand also. Yeah, you're choosing to be in that spot. Like, मैं आपको गन पॉइंट पे तो लेके नहीं आ रहा. आपको पता है बस ये कैसा है. You still feel like I think I can connect with this guy, and then you do that. बेस्ट है वो. आगे वाले को भी पूरी इन्फॉर्मेशन है, आप तो आप हो ही. And it works out. I think it's decent. And in the end, So they know the body count you have. No, I don't know myself. What will they know? But it might be I don't really know good, huh? myself. Because every time I meet a female, you know, I'm fond of you and I really talk highly about you in every podcast of mine. Always they just I just feel like you have like massive body count, huh? I honestly lost it a long time ago. the count. Because आप अगर मेरा रोडीज फर्स्ट देखो ना, तो पहले ही कैंप में मेरी एक फ्रेंड थी, आई थिंक प्रभजोत. शी वाज लाइक, बस ये बताना कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी. तो मैंने तभी ये बोला था, आई वाज लाइक नहीं याद है मुझे, मत पूछो. Anyhow, saying all that as well, I still feel like I'm a giver. I have been used by so many of them. I'm such a fool when it comes to emotions. कभी कभार मैं slide होने देता हूँ. कुछ ऐसे toxic लोग भी मेरे को आके use करके चले गए. And I'm like, ठीक है, lesson learned at least. Yeah, I agree on couple of. Yeah, we know them, and it's just ठीक है. Sometimes bad apples also find their place. So basically, you've never fallen in love. I have. Have you or heart? Have you broken? I'm not going to name, but after this one relationship that had nothing to do with the reality world and all Yeah, that, just sure. before I got famous, the one important relationship of my life that lasted for about 3.5 years. That was the first time I ever fell in love with someone, and it was so serious that मैंने अपनी mom को भी बोल दिया था कि मैं आप लोगों को भी छोड़ दूंगा इसके लिए, मैं जाऊंगा ऐसे शादी करने, मेरे को करना है. She was someone like she had a command, she was leader, और उसकी personality इतनी strong थी कि मतलब I was so mesmerized with the person she was. She helped me have these tastes, these flavors, these fragrances, and some places you go to, you order the same thing because उन जगहों पे आप वही सब खाए हो.
like back then when I was a teenager. This was that first pehla pyar wali cheezein. So after that, there was only 2 girls I really felt that I fell in love with. Both of them lasted around less than a year. This one you were talking about, the main girl, like, so were you heartbroken? Yeah, I was. Yeah. That was the reason why I was so hungry on the first season of Roadies and Splitsvilla. I think Prince Narula also has the same story. Huh? Have you heard his story? No. So he, Maybe he must have said. yeah. So he would have he went to Roadies. उस लड़की ने बोला मैं तेरे को डेट नहीं करूँगी and all of that. Then when he won, I think Big Boss और Roadies or probably उसने लड़ी लगाई है. इसके लिए, प्रिंस भाई के लिए. हाँ. Like for real. So I think lot of male like energy. Yeah, but I think you need that reason. But are you looking for love? All these years I've realized you shouldn't be looking for it. Unexpected. It will find you. And trust me, those are the ones that will actually leave a mark. And ज़रूरी नहीं है कि जो प्यार आपको मिले वो प्यार आपकी मंजिल हो. I was doing this podcast with Nikita Bhadampuri. Bhamidipati, whatever. So she said that, you know, me and Basir, like, we've parted ways, but we'll be like, I don't know if, you know, friendship is there or not, it's gonna be there or not. She said something like that. So when was this? After that night? Yeah, no, in the podcast. That same only. night? Yeah, in the podcast It only. doesn't matter. So are you in touch with her? Or? No. Are you seen nothing? That page is book is burnt. I think I am good. I think we're good where we are. It's better to just leave it wherever it ended, because it hurts me even today. Yeah. A lot of it. So when you were talking about this relationship you had after the main girl of your life, does Nikki come in that category? Yeah. Yeah, she does. Yeah. Okay. I cannot lie. See, this is the thing. If I was there, I was there. If I was, like, I've been with so many other girls. You know the number of people, the amount of people from MTV and all. So many of them are popular people. But नहीं था तो नहीं था भाई. प्यार हुआ नहीं हुआ तो नहीं हुआ. जहाँ हुआ ऐसी जगह हुआ जहाँ पे नहीं होना चाहिए था. हो गया. अब जब वो इस तरीके से हुआ, that night, that last night, that the way things came out in front of me, I was like, self-respect से बढ़ के तो नहीं. So Nothing was more than that. All this Casanova personality of yours, like, does Basir also has that side where, you know, like, he'll take an approval from his mother while, you know, like, he's gonna get married and all of that, and then, or you are rebellious there also? नहीं. वो क्या कहावत है? Something लाएंगी तो मम्मी ही. 36 आएंगी 36 जाएंगी, but लाएंगी तो माँ ही. आज ही, in fact, my mom was like, I'm gonna start looking. I was like, yeah, please, अगर आप ला सकते हैं तो आप ही ले आओ. मतलब जिसकी जहाँ से भी नसीब है. Yeah, I mean, you're okay with love marriage? Absolutely. जैसे for example, arranged marriage. Why not? जैसे आज मैं अगर कोई एक लड़की को मैं खुद पसंद कर रहा हूँ और उसके साथ relationship में जाके शादी करने का सोच रहा हूँ, प्लानिंग तो अरेंज ही हो गई ना वो. एक तरीके से मीटिंग अ न्यू पर्सन. अब अगर मेरी माँ ढूंढ के ला रही है तो एक इट्स जस्ट लाइक गोइंग ऑन अ डेटिंग ऐप एंड मीटिंग समबडी रैंडम, राइट? इट्स जस्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू. आप उसको कैसे देख रहे हो, अरेंज में क्यों जाऊँ, क्या पता यू नीड दैट पर्सन इन योर लाइफ. और आपकी माँ ला रही है तो कुछ सोच के ला रही है. So I want to ask this, like, about your mom. Like, are you really connected your mom? Yeah, What's your absolutely. relationship with your mom? She's my best friend. Absolute. You share everything with her. Everything. She knows everything about my life. Has she seen all that hustle to make you who you are right now? Yes, 100%. But खूबसूरत बात ये है कि mom openly बोलती हैं कि अब तुम जो भी कर रहे हो बेटे लाइफ में, इस सब के पीछे तुम खुद हो. हम तो तुम्हें ये दे भी नहीं सकते थे. लाइक हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है इंडस्ट्री से, टीवी से, एक्टिंग से, इससे उससे. सो शी गिव्स मी दैट क्रेडिट कि यू डिड दिस फॉर योरसेल्फ एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू. But I tell her that you made me capable enough to achieve this. What is that one memory of your mom you had, like, when you won the show? Like, when you won Splitsvilla, you called, right? Yeah. So did you call her and tell her and like? Yeah, I did call her. I was like, Mom, I won it. She's my biggest cheerleader. She's absolutely the one person you'll always see cheering for me, even when I'm losing, even if I haven't won. She always told me that winning doesn't matter. It's about what you do while you're on the show. When you come back, when the world will see and all that. But the funny thing about my, you know, one reality show fixed all my problems with my mother. Which one? Ace of Space. Why? All Apparently, your problems? when she saw me on that show, एक होता है ना बड़े होते होते एक बच्चा, बॉय था मैं, मॉम इज अ लेडी, तो वो जो टीनेज में होते होते वो डिस्टेंस आ जाता है थोड़ा थोड़ा. हमारे बीच में इश्यूज भी होने लगे थे अबाउट लाइफ, अबाउट स्टडीज, अबाउट फ्यूचर, दिस दैट. तो वो जो जितनी भी डिसरप्शंस होने लगी थी, when my वो एक
हर चीज़ मैं नहीं बोल पाता मम्मी को कि मैं मतलब पर्सनली क्या चाहता हूँ लाइफ में, मैं मम्मी के साथ नहीं हूँ, जब अकेले मैं कैसा हूँ, दोस्तों में कैसा हूँ. तो जब मॉम ने मुझे 24 आवर सर्वेलेंस पे जब एस ऑफ स्पेस में देखा ना ब्रो, उस टाइम पे शी रियलाइज दैट आई एम सो मच लाइक हर. तो शी चेंज द वे शी यूज्ड टू ट्रीट मी. I remember she came on the show as well, right? Yes, yes. When you And were in the ASO space. it was important for my relationship with my mother for me to be on that show. How's your relationship with your co-stars there in ASO space? They're all doing amazing in their life, for sure. Like, Yeah, I think ASO absolutely. I space think people. so many people are doing so well. Divya was Divya there. was the first season. It was not mine. Okay. I was in the season with other people. Shruti was a part. Nikki was a part. Salman, that guy from Hyderabad, he won the show, right? Adnan was a part. Yeah, very good, yeah. Everybody's So doing Salman, really well. Zaidi and you were like the besties, right? Yeah, we but used then to be you, best friends in college. Yeah, but then you fell apart. Yeah, we fell apart way before I became Did you wish him relevant. on his marriage? No, No? no. Are you somebody like that, like who, like if somebody like your best friend, if he's, you know, having like getting married or, you know, having a hard time in their life, like even if you've gone through a lot of issues, so will you text them back, like will you text them in their hard times or whatever? No, I will be there if they need me and call me. If they call If you. they call me and they say, "Yo, this is what happened. I think I need your help," I will be there. Okay. But I Rest, don't. I you don't won't need to make be the standing first move. outside their door. I don't need to be there. Okay. Unless they need for me, and if anybody does, they can test this. I have been there whenever they needed me, but खुद से जाके उस चीज को खोदना is not me. Okay. Maybe they don't need you, so why Yeah, make an effort from exactly. your side? तो जो भी उसके बाद भी शो के बाद भी बहुत ऐसी चीजें सामने आई. मैंने कहा जब वो रिश्ते में कुछ रहा ही नहीं तो क्यों ही हम इस चीज को जिंदा रखें. आप अपने रास्ते में अपने रास्ते. So you believe in like what's done is done? Oh yes, मैं तो ऐसे ऐसे तोड़ता हूँ रिश्ते. I don't. If I feel once also that oh fuck ये ऐसा हो गया, जरूरत ही नहीं है रखने की. दुनिया बहुत बड़ी है, लोग भी है बहुत. Since you've been acting in this serial, I want to know this question. Okay, I ask a lot of people who I do podcasts with who are into acting and all of that. When you, firstly, I want to say one thing which I'm really proud of, that when you entered the show, it felt like, you know, Mango Man has gone and like he's trying to act, right? But now when we see like the clips of your, you know, things coming on the edits and gram and everything, I feel like, wait, what? Is this the same guy? Did you take acting classes or what? No, never, never. I never took any acting classes, any workshops, any tips. जैसे होता था ना जब मैं रियलिटी में शुरू हुआ था तो मेरे साथ प्रियांक ये सब थे, वरुण वगैरह, स्पेशली संयुक्ता ये एक्टर ये तो फिल्म करके आई थी. तो एवरीबडी यूज्ड टू सिट एंड टॉक. और वो टॉकिंग में मैं पार्टिसिपेट करना भी चाहता था. तो बैठ के आराम नगर की बातें होती थी, एमसीसी मिस्टर मुकेश छाबड़ा के डिस्कशन, विकास गुप्ता के डिस्कशंस, वो excuse me, they talk about shots, they talk about this ad, they talk about auditions, they talk. और मुझे कुछ नहीं समझ आता था. मैं से हाँ अच्छा रामनगर, अच्छा कहाँ आता है रामनगर, अच्छा वहाँ पे ऑडिशंस होते हैं, अच्छा अरे 100 लोग आके खड़े होते हैं, 6 घंटा लग जाता है ऑडिशन, अच्छा मतलब मेरे को तो करना ही नहीं है तो मैं क्या ही करूँ. Today I am sitting in the middle of it. I am a lead on a show. I am acting. People are bloody liking it, clapping for me on the set. ऑडियंस का प्यार मिलना है, एवरीथिंग इज गुड. बट जो लोग जिंदगी भर पिछले 10 साल 15 साल से शोज ही बनाते आ रहे हैं, रोज सुबह उठ के घर को छोड़ के सेट पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं अपने वाइफ और किड्स से ज्यादा. वो लोग अगर आपको आके बोल रहे हैं सर ये जो शॉट आपने दिया ये टीवी के लेवल भी नहीं, इसके ऊपर है, तो मेरे को 1 साल में ये फीलिंग मिल रही है, तो मतलब आई एम डूइंग समथिंग राइट. So no acting classes, nothing. Zero. Did you ever stand in the line though? Like audition line. See, that's Not what I'm even saying. You Roadies. are privileged kind Not of. even Roadies. Really? I hustle for it. मेरा फर्स्ट शो जो था रोडीज पे जब मुझे बुलाया गया था हमारी फोन कॉल कॉन्वर्सेशंस के बाद, they said come down for the audition. I said अपने आप मुझे टिकट दे रहे हो? बोले नहीं. वो बोले मैंने पूछा आप मुझे स्टे दे रहे हो? बोले नहीं. मैंने कहा अपने पैसों से फ्लाइट होटल लगा के मैं आके लाइन में लग के चांस लूं कि मुझे मिलेगा या नहीं. आप मुझे इसके लिए फोन किए हो? फिर So बसीर. पॉइंट एग्जैक्टली. और मैं तब तो फेमस भी नहीं हूँ. उन्होंने बोला मतलब हाँ. आई सेड सॉरी ये नहीं हो सकता. आप मुझे कुछ तो होप दो कि आपने मुझे फोन करके बुलाया है. Good for you. मैंने आपको नहीं ढूंढा, आपने मुझे ढूंढा. अगर आप मुझे दे रहे हो तो गिव मी अ चांस, लाइक अ फेयर चांस. देन दे गिव मी द ऑप्शन कि आपको हम एक क्वेश्चनर भेजेंगे, आप उसको आंसर करो इन अ कूल वे, मेक अ वीडियो एंड सेंड इट टू अस. इफ वी लाइक यू we'll give you the jump the queue pass. So you jumped the queue pass. Yeah, I won that jump the queue pass by making a video. Then I went to Ahmedabad to audition. You will not believe this. I'm standing outside the gate. मैं ऑटो से उतरा हूँ and I see this huge gate. अंदर कम से कम 200-300 लोग तो हैं ही. गेट के बाहर से लाइन जा रही है जहाँ तक नजर जा सकती है आपकी, स्टेडियम के बाहर. अब मेरे को लगा what if I have to stand in this line? I won the pass and I came, but what if I have to stand in the line? I was just there. Now so many people are staring at me. I'm dressed like Basir. मैंने फ़ोन किया,
Literally अंदर से बंदा खड़ा था, yeah, you're here? I said, yeah, I'm here. I was like, okay, I'm sending a team. A team comes with 4 bouncers, one guy with the walkie and everything, crew. गेट खुलता है, बैरिकेड्स के बीच में से मुझे वो बाउंसर्स के साथ लेके जा रहे हैं. वहाँ पे कंटेस्टेंट्स जो खड़े हैं, जिनके साथ मैं ऑडिशन देने आया हूँ, वो कह रहे हैं, देख देख कोई स्टार है शायद, कोई सेलिब्रिटी है शायद, स्पेशल ट्रीटमेंट. हाँ, जब तो टिकटॉक भी नहीं था, कुछ नहीं था. ये 2016 नवंबर की बात कर रहा हूँ, टिकटॉक आया भी नहीं था जब तक. तो imagine these kind of things were happening and I was like, okay, if it's starting on this note, then let's go. So you are telling me basically that you were not standing the line while going for Roadies, and you did not stand in the line for all the TV series you are doing. No, I didn't. Really? Yeah. So I'm that glad, means so you have been lucky enough, yeah. Because I've seen a lot of people really hustling. I have said this out loud that I am probably God's favorite child. अब एक चीज बताओ, ठीक है, ऊपर वाले ने मुझे वहां तक आसान करके दिया, फिर बाकी मेरी जर्नी, क्या और मेरे क्या परफॉर्मेंसेस, हाँ. जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई, मैंने क्या किया उसके साथ? मैंने फाड़ा ना, मैंने तोड़ा, मैंने दिखाया उधर कि you give me a chance, I will show you how I'll do it. Because it was being given to me like that, I performed and I got the result of it. तो it's a fair give and take, right? अगर मैं वो स्पॉट लेके इतनी आसानी से वहां पहुंच के अगर मैं टट्टी कर देता, मजा आता? नहीं. अरे यार, इसको तो चांस भी मिला फ्री में, कर भी नहीं पाया, लूजर. So they basically called you. So they knew that who we are calling, and They didn't. They probably didn't. Only after they had conversations with me and MTV did the audition rounds and all, they thought I was potentially a decent guy. And if you'll go back to my seasons, I mean, look at us: Shiv Thakre, Priyank, Divya, Samyukta, me, Varun. We're all still relevant. We're trying to do whatever we can. इधर उधर से मैं अपने आप को acting में लेके आ गया, भव्या. I mean, acting was the last thing in my mind in my life. I what never did you think thought. you'll do after all of that? मेरा प्लान तो सीधे अमेरिका जाके कुछ तो फैमिली के साथ फिगर आउट करो, एक बिजनेस प्लान बनाओ. आई वाज एक्चुअली डूइंग दिस कोर्स कॉल्ड द Oracle DBA. It's a database administrator. You got to sit in front of the computer screens and everything, and these companies do whatever. वहाँ पे उनके पास कुछ टेक्निकल मिशैप होते ही आपके पास एक कमांड्स दिए गए हैं, जो भी एरर आया वो कमांड मारना है, एरर को ठीक करना है, get their systems back and up and running. It would give me about $40 to $50 an hour every day, and I would be working for about 8 to 10 hours. How many dollars is that per day? About $400 In 30 days? In an hour? Yeah. That's Four? about $30,000-$40,000 a month. A That's month. lot. Exactly. So I was on that way. मैं ऐसा तो stupid नहीं हूँ कि मैं बेकार लाइफ जीता. मैंने ऐसे खोपचे से निकाल लिया था कि मैं 2-3 कोर्स करूँगा, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े करे, अमेरिका जाके भाई लोग के साथ ज्वाइन करके ये करना है. So basically what I'm trying to get the gist out of this is that you basically believe in smart work. Yeah. And not in hard work. हार्ड वर्क तो लगेगा. हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट. हार्ड वर्क बीट्स एनीथिंग. कोई भी. अरे मैं जो बसीर आया था, वो बसीर क्या ये सब कर सकता है जो मैं आज कर रहा हूँ? नहीं. मेहनत करके यहाँ तक आके ग्रूम करके अपने आप को लायक बनाया कि बालाजी मुझे बिना एक्टिंग एक्सपीरियंस के एक लीड शो दे. उनका रनिंग प्रोमिनेंट 7 साल का सक्सेसफुल शो उठा के उन्होंने मुझे दिया विदाउट एक्टिंग बैकग्राउंड, विदाउट एक्सपीरियंस. और जिन लोग आए थे ना मेरे साथ, मैं नाम नहीं लूंगा उनके, बहुत अच्छे लोग आए थे जो शौर्य के रोल के लिए ऑडिशन दिया. क्वाइट गुड पीपल, एक्टर्स, famous people, more popular than me, more relevant than me, maybe acting wise also भी experience था उनका, but I got it. तो कहीं ना कहीं लायक बनाया तभी. But you have toned down a bit also. A lot. I think the Basir I saw in reality TVs was very rowdy. Yeah. And all I of miss that guy. Even I'm. I miss that guy, but I think वो फिर शायद एक झलक बिग बॉस में दिखेगी लोगों को. बिग बॉस में दिखेगी. 100 दिन तो मैं सेट की टाई लगा के नहीं बैठ सकता हूँ. ओके चलो, इससे भी एक रील कट जाएगी जब आप बिग बॉस में जाओगे. तो आप बिल्कुल 90 दिन का सोचा. You want to win this show. Again, I quit wanting to win. I want to live every day over there in the moment. I want to make that journey worth it. I want to show the people what they want to see. Since इतने सालों से जो बोल रहे हैं कि भाई आ जाओ शो पे, आ जाओ शो पे, आ जाओ, तो the wait should also be worth it. Once I go, I know that मैं किसी की सुन के लेनी. Yeah. I have. It's not the first time यार, इतने सालों से हो रहा है. 1-2 बार थोड़ा सा स्पेशली आ रहे थे, अब ऐसे random general आ रहे थे, but this year was very keen. Like my previous channel wanted me to work with Big Boss this year, but हो नहीं पाया obviously. I am also personally not ready. अब मेरी physique कितनी कम हो गई है. I'm talking about the physique, like you've lost a lot of weight, bro. Yeah. I have to play a 22-year-old boy on screen. So why not? So what is your age right now? What do you think?
28, 29. I am 28. I will be 29 in 20 days. Yeah, max. So now you're playing 22-year-old. Yeah. I look decently 22. Since now you'll get married on the show also. Yeah. You're married like on the a young show. father. Yeah, and you'll become a father on the show. Yeah. So like, how is it? Like, do you want to play that kind of roles? I don't mind. होता ये है ना कि शुरू में मुझे भी कंप्लेंट्स रही थी शौर्या से कि यार ये क्या करवा रहे हैं ये वो बट देन यू ग्रो इनटू योर कैरेक्टर एंड वंस यू ग्रो यू अंडरस्टैंड द डायनामिक ऑफ योर कैरेक्टर की फैमिली प्रेशर ये भी है ऑफिस प्रेशर ये भी है इसकी कैरेक्टर की ये डिमांड है स्टोरी की डिमांड है ये वो तो व्हाट यू वांट टू डू विद योर कैरेक्टर इट्स नॉट रियली इन योर हैंड्स एंड as an actor it's best you don't question creatives just keep doing what they want you to do Really? You are saying this? yeah acting में reality में नहीं. So, like, if sometimes I want to ask you this question, like I've done podcast with couple of people who were acting. Like I've done it with Nibbi. Yeah. You know, she had this complaint, like, you know, like they call us at 9 and they send us home at 2. And like that 3-hour span, we are working and, you know, sometimes we get paid and sometimes we don't get paid. I don't know about this work. But your time? I'm promised 12 hours every day. From the moment I get a call time, I am supposed to give them 12 hours. कभी 10 में भी हो जाता है, कभी 4 घंटे में, कभी 2 घंटे में भी काम हो जाता है. But कुछ दिन ऐसे आते हैं ब्रो कि मैं सुबह 9 बजे, अभी मतलब बहुत ऑफन होता है, मैं 9 बजे गया हूँ, 10 बजे तक मेकअप करके रेडी, पहला सीन मेरा 6 बजे लग रहा है शाम में. From 10 AM to 6 AM मैं सिर्फ चिल कर रहा हूँ, मेकअप करके. So it's okay. I'm not sure if it was Al Pacino or Robert De Niro, but one of them actually set out saying, you do not get paid for acting as an actor. You get paid to wait. It is a part of the show, But man. see, It's a lot part of the people life. have said that, you know, this guy is really nice, but, you know, he carries a lot of attitude with Oh, fuck him. yeah. It is for the people who cannot match up to that. आप हो badass. आप मेरे से फर्स्ट टाइम जब बात करने की कोशिश की, जब भी हमारा पहला इंटरेक्शन हुआ, आपको डिफिकल्ट लगा? नहीं. आपको ऐसा लगा कि मुझे डील नहीं कर सकती यार, मैं इससे इसका झेल नहीं सकती? कभी ऐसे लगा भी कि ये टू मच है? जो समझता है उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी. जो दूर से देख के जज करता है ना, अरे ये ऐसा होगा, ये उनकी मनगढ़ंत कहानी है. And 99.9% of the people in my life who've actually touched my personality and found कि अच्छा बसीर actually soft है या ऐसा है वैसा है, उन्होंने मुझे ये बोला है कि ब्रो मैंने ना गलत सोचा था तेरे बारे में, कि मुझे तू लगता था तेरा एटीट्यूड है, तेरा प्रॉब्लम है तेरा. तो मुझे पता है मैं अपने आप को कैसे कैरी करता हूँ. आई लाइक being unapproachable. So what is that one advice like you've got from somebody and which has worked for you, like if I ask? एडवाइस तो नहीं, मुझे एक स्केयर मिला था रन सर से अपने पहले ऑडिशन में रोडीज के. उन्होंने कहा था यू आर द काइंड ऑफ अ पर्सन, अगर तुझे बहुत जल्दी बहुत कुछ मिल जाए ना तो 25 तक तू बर्बाद हो जाएगा. माँ कसम 25th बर्थडे तक भी मेरे अंदर वो एक डर था कि अगर मैं नहीं कर पाया, सक्सेस वैसी नहीं दिखा पाया, तो शायद सर सही थे. बट एट द एज ऑफ 28 जब मैंने पिवट लिया, अब एक्टिंग कर रहा हूँ, आई एम डूइंग बेटर इन माई लाइफ, आई फील लाइक वो अगर नहीं बोलते तो शायद मेरी ड्राइव वैसी नहीं होती. I just want to know this, like since you've been part of Roadies and like, you know, Splits and Ace of Space and know all these people also who work, you know, like what do you think is the creative change in the format of the show now? Because they're selling things, like Right. as a consumer, you are consuming things which sometimes cross a line. Like you know, हमारे time पे like there was no violence. Yeah, things are going way beyond what it was like before. That guy Arman slapped Vishal Pandey on the show. Unacceptable in any sense. But people in the house didn't revolt. Yeah. That's the thing. If they don't say anything, who are we? तो होता क्या है जब आप एक रियलिटी शो पे नए कंटेस्टेंट होते हो, स्पेशली न्यू कमर होते हो, तो आपको यू डोंट नो हाउ थिंग्स वर्क. इट्स इजी फॉर पीपल टू मैनिपुलेट यू इनटू डूइंग व्हाट्स बेस्ट फॉर देयर शो एंड रन अहेड विद इट. सो people were smart, they let it slip, they let it go forward, the show season did well, the show got over, everybody goes home happy, nobody is talking about it today. But अगर वहाँ पे contestants थोड़े personality वाले होते, विशाल खुद अगर खड़े होकर शायद बोलता कि I will not support this, तो शायद I कुछ just और found him होता. very spineless. थोड़ा, he's a good friend of mine. I mean, I still don't know what was going on inside firsthand. I will find out, but I feel like Did he you should see have this taken a stand more. season? Like two men fought. Like I don't want to name, but there were two people. Yeah, prominent figures. One of them is my idol. Yeah. Who's no more, right? Who? Who are you talking? Big Boss की बात कर रहे हो ना? No. Okay, okay. I'm not talking about Shukla, bro. I I was love talking about Shukla, yeah. So I want to talk about this thing, like you know, like two people in Splitsvilla this season. They had Hata Pai,
and all of that. Like you could have also fought. You were in that stages in your show as well where हमने you मारा could भी have. है बट लोगों को दिखा नहीं वो. हाँ. मारा भी तो ऐसे नहीं मारना चाहिए, शर्वर फट जाए, निशान निशान दिखने लग जाए, थोड़ा सा गुप्पत वुप्पत मार के गायब हो जाने का. बट ठीक है, आई मीन इफ यू गो बैक टू सीजन 10, इवन आई गॉट इनटू अ फिजिकल अल्टरकेशन विद वन ऑफ The the contestants, who's a good friend today also, Honey. बट ऐसा भी नहीं था जैसा ये हो रहा है. ये सीजन का ना तो बहुत इंटेंस है, बहुत पहले से कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है. वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो गया वो. आई फील लाइक इतना नहीं होना चाहिए था. Did you watch this season? Very Instagram पे because it was doing really well. Yeah, It was the PR literally was everywhere. crazy, bro. नहीं, actually they made a good show this time. जो एंगल लेके आए थे ना, एक्स गर्लफ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स भी आए हैं, फिर वो दे फाइटिंग फॉर ईच अदर, देन वो जितना भी जो स्प्लिट से लगा एक नया फ्लेवर था इस बार. वो ऑरेकल ये सब को कंटिन्यू करते हुए भी एक नया फ्लेवर लेके आए. दैट्स व्हाई आई थिंक द सीजन डिड वेल. सम कंटेस्टेंट्स वर एक्सेप्शनली डिसेंट. ठीक है, अच्छा किया उन्होंने. बाकी Like, बस who's your favorite? आई कैन से शो चलाने के लायक से Akriti Negi actually made the show very interesting. She was one side of it. I feel like Kashish Kapoor was really like a strong side of the show. Though the way it ended, it was very disappointing. Okay. Digvijay, man. Digvijay, I mean, yeah, good, good, great stuff. Okay, so now I want to know about your equations with your particular idols, like you know Ranvijay. Amazing. You still in touch with him? Yes, yes. हमारी 2-3 हफ्ते पहले ही बात हुई. He was like, तू ये बकवास बंद कर. I'm so happy for you कि तू अभी एक शो कर रहा है and you're sorted in Bombay. तो कोई इधर उधर जाके सर फोड़ने की जरूरत नहीं है. You're blessed. Keep doing. I'm proud of you. तो जब जो जिन्होंने मुझे बोला था कि तू अगर सही टाइम पे सही नहीं करेगा तो 25 तक बर्बाद हो जाएगा, जब वो मुझे आज ये कह रहे तो I feel like I'm doing the right thing Prince? somewhere. Amazing. अभी 4-5 दिन पहले उनके बेबी शावर में गया था. It's all the same with him. It's always a beautiful day with Prince. So you get along with everybody now. Yeah, mostly. जैसे अभी for example, before I was very close to Neha Dhupia also. अब हमारी उतनी बात नहीं होती. We just fell apart. So many people like I used to be good friends with. अभी उतना नहीं. जैसे रफ्तार भाई भी बेबी शावर में ही मिला मैं, but generally हम उनसे टच में नहीं रहते. We see each other in a party. There's Divine, there's रफ्तार भाई and all. They all just meet very gracefully and everything. But generally ऐसे नहीं है कि हम टच में रहें. There is this rumor that you were approached as a gang leader. Maybe we could say it was a discussion. It was not proper officially there, but in that season exactly there was a time when Nikhil was not able to continue and one person had to take over and then Varun Sood was chosen. So it was that season जहाँ पे मुझे एक discussion का हिस्सा था मैं, but I can't say that I was called to be the gang leader because it wasn't that way. But Varun, do you think he did a good job being a gang leader? I mean, I'm not supposed to comment, but I think he could have done better. He could have I done think it. he could have done Who do you better. see as a host in the Myself, coming? man. Excuse me. Like, Yeah. I think I would love to if given a chance, but I think it's gonna take a while for people to see me at that spot because Yeah. I'm still relevant to the younger ones. I'm still relevant to the newcomers who are coming on splits and roadies के नए seasons. तो अगर मुझे वहाँ पे देखना है तो शायद अभी थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा उसको ग्रोथ को. But you are still considering that. Yeah, MTV is where I started from and reality is my forte. I think auditioning से लेके वहाँ पे खड़े हो. So many times I see this season, I'm watching an episode somewhere, some clip and I'm like, यार मैं यहाँ होता तो मैं ये बोल के इतना फायर कर देता ये सिचुएशन में. और मेरे पास पॉइंट भी होता है कि अरे ये लड़की ने ये किया था ना पिछली बार, इसको ये क्यों नहीं बोला गया. तो I know my brain works in a good fashion if I'm given that authority there, but it's all about Okay, now do you have the thing to participate in Big Boss now in future? 100%. Big Boss तो मतलब definitely करूँगा मैं. कभी ना कभी तो करूँगा. It's just that Why? But you just said that you I don't- want that it's a dream. Okay. Because You want to जब- live that. Yeah, I want to be there. I want to feel. I being on Big think Boss. you really relate to Siddharth Shukla and like 100%. Or what do you like about Siddharth Shukla? We all love everything about Siddharth Shukla and like you know there's no one single day I don't miss him. Like I love एक, him. 2, 3, 4, I posted 5, that on my 6, story 7, today. 8. सब के सब फाड़ में जाओ. तुम लोग से दोस्ती बनाने नहीं आया हूँ मैं. रिश्ता बनाने नहीं वो आया. बोलने के रिश्ता बनाने नहीं. वो बोलने के बाद सारे स्टार्स, सारे सेलिब्रिटीज सब चुप. अपनी अपनी जगह पे बने हुए हैं. किसी में कुछ नहीं था उठ के उसको बोलने. क्यों? क्योंकि वो सिद्धार्थ को जानते थे. सिद्धार्थ शुक्ला एक्चुअली में ऐसा है. ये टीवी पे आके हीरो नहीं बन रहा. तुम कैमरे के बाहर उसको घर पे मिलो तो ऐसे एटीट्यूड में मिलेगा. तेरा बाप बोल रहा है ना. तो अब बसीर को जब जानने लगे हैं धीरे धीरे एक्टिंग की वर्ल्ड में भी जब ऐसा होगा, कल के दिन मैं जाके अगर मैं ऐसे बोल भी दूं तो लोग ये नहीं पूछेंगे ये आप क्यों हीरो बन रहा है. उनको पता रहेगा कि ब्रो ये है वैसा शुरू से. So you want to play like Siddharth Shukla? आई नो आई एम लाइक हिम. कल के दिन में जाके टीवी पे जब मैं रहूंगा तो लोग देखेंगे बोलेंगे ये तो वैसा ही हो रहा है.
शायद मैं कह रहा हूँ, एक अंदाजा है मेरा कि जब दिखेगा तो बोलेंगे या तो ये ओवर कर रहा है, जो लोग मुझे नहीं जानते, एटलीस्ट दोस पीपल विल नो, actors and people in the industry and the people who will be competing with me on Big Boss will know that he is like this. Yeah. I think you have that quality in you that you. Already word of mouth पे people know, बस ही जैसे आपने बोला वो attitude, arrogant है, गुस्से वाला है, ये वो जो बातें होती हैं ये भी justify करेगा. So you also think that your exes will be called one by one, like how Siddharth's exes were? 100%. क्या पता एक दो creative में भी बैठी हो पीछे. And then if you win the show and then people, he was creative. That's why he won the show. Imagine people can say all kind of obnoxious shit. Yeah, you know? man. It's just, But I just love the fact that you still remember Siddharth Shukla. And yes, did you watch the whole season though? yeah. So how do you like Asim? I really like him too. You I mean, do? I don't have anything against him. Even right now, अभी जब इसका controversy हुआ था with the Rohit. खतरों के खिलाड़ी stuff, I felt for him. I You feel like lie. he was cornered and bullied. Thank you. Analyze कर सकता हूँ मैं क्योंकि Everybody was laughing at him. अरे मैं तो पता भी किया है कुछ चीज़ें. This guy when they were taking the flights, airport पे जब contestants को जमा करके यहाँ से travel कर रहे थे वहाँ, तभी से taunts, छोटी छोटी बातें बोल के साइड में हंसना, गिगल करना, उसको कॉर्नर फील कराना. कितनी देर एयरपोर्ट लगा के कोने में बैठा रहेगा एक इंसान. यू आर बुलिंग दैट पर्सन, यू आर मेंटली टॉर्चरिंग हिम, एंड द पीपल ऑन द अदर साइड हु आर टॉर्चरिंग हिम आर Yeah, लिटरली टू वन ऑफ देम इज अ कॉपी करता है उसकी वो. कौन? वन ऑफ द गाय. अभिषेक. हाँ, कितने लोगों ने देखा है, बोला है कि यार ये बंदा उसकी तरह बनने की कोशिश करता है ना. कुछ भी नहीं तो नहीं, आप नहीं भी करते हो, रिस्पेक्ट तो करो. वेटरन वो भी तो कुछ करके आया है, इतने सालों से मेहनत कर रहा है बंदा. I just said this in Shardul's podcast. I was doing this and then Shardul was like, Bhavya, but what do you like about Asim? अगर आसिम के पास एक भी दोस्त होता ना उधर, हाँ, he would have. मजा आ जाता. मेरे जैसा अगर एक दोस्त होता ना, मजा. I think Shilpa Shinde really tried to help him out, but Yeah, she could she not. was one person. Yeah, Where she's I very feel- sweet. I really yeah, like her. Yeah, I just feel like might as well people he was taking like things out of like hand, like he got little, like he could have controlled that. थोड़ा But सा उसने yeah, excess बोल दिया But they चीजें. did not show, the creatives did not show the backstory of it, and they only were showing the fact that he went and fought with Rohit Shetty. You want to show what's else? Did you watch after that episode, by the way? I just watched that episode. Success. That's just हो गया I काम हो love गया the fact that he's PR. like आता जाता रहता है, किसी को पता भी नहीं चलता था. Because of me, bro. Loved him, bro. Yeah, Anyway, Trace God's Basid, before we end this podcast, like, which unfortunately we have to, I Time want you constraint. to share a couple of things with your audience who have been missing you because they've been making your reels, like, you know, like Bap Yeah, and all that, and yeah. Sun and, you know, Bachcha. And I've seen a couple of reels. नहीं, ऑनेस्टली रोडीज के बाद, स्प्लिट्सविला के बाद, काफ़ी रियलिटी शोज़ के बाद जो ऑडियंस देखी, जो प्यार देखा, वो मैं बहुत मानता था. वो चीज़ को आज भी मानता हूँ. बट एक्टिंग की दुनिया में जब से आया हूँ, जब से मैं शौर्या प्ले कर रहा हूँ, बालाजी के साथ जुड़ा हूँ, जी टीवी के साथ जुड़ा हूँ, द काइंड ऑफ एफर्टलेस लव, दुनिया के डिफरेंट कोनों से बच्चों को इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्म करना तक नहीं आता बिकॉज दे आर आइदर इजिप्शियंस और फ्रेंच और नेदरलैंड्स से कहीं ऐसी कंट्री पे जहाँ पे इंग्लिश बेसलाइन नहीं है. बट इतना प्यार मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. इट्स सो क्रेजी. आई जस्ट फील लाइक उनको कम्युनिकेट करने भी नहीं आ रहा है, तब भी वो कुछ ना कुछ करके मुझे कन्वे करते रहते हैं. How you balance all of this is crazy, It's bro. crazy, and you know, वहाँ पे I keep finding people who just automatically involve themselves in becoming my back-end team. Like there's a guy, he meets me in the studio. Studio पे होता है ना वो टूर पे Americans जब दुनिया के कोई भी कोने से आते हैं तो उनको दिखाते हैं कि बॉलीवुड की शूटिंग ऐसी होती है, वो टूर्स पे लेके आते हैं. तो this guy always gets these international tourists and comes in front of me and is like, this is a star, ये वो मुझसे मिलाता है करता है. And when he goes and posts these pictures on his Instagram, my fans reach out to him because he sees the kind of heat my fans have कि बसीर से बात कराओ, ये हमारा मैसेज पास करो and all. He actively conveys messages and actively meets me saying this one said this to you, this one said that to you. हमने मिलके ये ग्रुप बनाया, हमने आपके लिए पोस्टिंग की है, एक और एक पेज बनाया, ये किया वो किया. I'm like, मेरे को पता भी नहीं है, पीछे बैठ के लोग मेरे बारे में इतना डिस्कस कर रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं, मेरे लिए चीज़ें कर रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, it's beyond beautiful and I'll always be grateful to this. So you were born to be a star. I guess ना. देखो आप जर्नी आप ही देख लो, जो आपने पूछा लाइन में नहीं लगे, वो नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, फिर भी अल्लाह ताला ने यहाँ तक लाया. मतलब कुछ तो लिखा ही है. हाँ, लिखा कहानी हुआ तो है. लिखी है अभी. एंड और अभी कहानी बाकी है. इस रास्ते पे एक चीज़ तो सीखा हूँ कि मिल सकता है नसीब से, बट मेहनत के बगैर कहीं जा नहीं सकता. I just believe in that so much. I feel like God gives you
But if you don't work for it, Live up to it. he'll take it back. 100%. देने वाला भी वही, लेने वाला भी वही. Yeah. Simple as that. But any which ways, guys, this was Basir for you, and Yes. I have and mad love for you, bro. You are amazing. People same, might same, say that same. you have a lot of attitude, blah blah blah. But I just want to say one thing, that this guy has been nothing but supportive towards me, and you know, like how many times you should start paying me for the PR I'm doing for you. Okay, bye. I want you guys to know this. Bhavya literally walked into my life like a guardian angel, and Oh my god, are you gonna say this? the way she pulled me out of something really dark in my life, I am always going to be thankful to her, and I'm not going to lie. The way you've been so consistent with your channel, the way you've been putting the effort, the way you go out of the way to deal with such difficult people, get their timelines, get the content, people who say I want to reshoot, oh I said too much, I want to cut this through, oh this, that. Ye jhelna karna, I know the Bhavya that you were and the Bhavya that you are today. Sometimes I feel like Respect. people don't consider me as a human being. I've just left with I a know. platform. But we see, the real people see your efforts, we see how Thank you. you've come here, and I see where you're going. Godspeed. So that was Basir for you. Before I end the podcast, I just want to say, like, let's manifest Big Boss for Basir, because I just hope, you know, I can flex that out one day. Inshallah. I want to say it like very proudly that, you know, I know this guy, and I still till date do it, but I want to do it And more. I promise I will give you guys that day. Yeah, and that was Basir for you. Any which ways, guys, we're gonna take your leave. Thank but you so much for watching us, and all the people who are watching this video because of me, you better go down there, like, subscribe and share with this channel, and do everything that you can to but get don't this video follow me in everywhere. real life. Follow her, because then you will see कितनी videos ये लेके आती है और कितनी मेहनत करती है अपने channel Oh, के thanks. पीछे. Okay, that's enough for the paid PR barter collab we Exchange. do. Anyways, guys, new video dropping every Wednesday, 4:45 p.m. Till the time. See you next. Stay tuned. Sayonara. See Bye. ya.